First question. Which deep, dense forest is often called the lungs of the planet? Which deep, dense forest often called the lungs of the planet? Yes, very good. The answer is the Amazon rainforest. ये फॉरेस्ट बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोड्यूस करता है. नॉट 5 नॉट 10, इट इज 20% ऑफ ऑक्सीजन. हमारे पूरे वर्ल्ड में जो 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन से होती है. अमेजोन रेन फॉरेस्ट अकेले 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. ठीक है. नेक्स्ट. व्हाट डू वी कॉल द लाइन of longitude designated as 0 degree that passes through Greenwich, England? The answer is the prime meridian. कई लोग इक्वेटर बोल रहे थे. 180 डिग्री है ये कुछ भी. Next. Which country is entirely surrounded by South Africa, making it a country inside a country? एक ऐसी कंट्री जो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका ने जिसको चारों तरफ से घेर रखा, जिसके चारों तरफ साउथ अफ्रीका है, एक तरह से कंट्री के अंदर कंट्री है. So the answer is लेसोतो. लेसोतो एक ऐसी कंट्री है जिसके चारों तरफ साउथ अफ्रीका ऑलरेडी है. ठीक है. देखो अब आंसर मैंने दिखाया था, अब आंसर आना शुरू होगा. नेक्स्ट. What phenomena cause ocean currents and winds to curve to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere? बताओ जरा. The answer is the Coriolis effect. इस इफेक्ट की वजह से नॉर्दर्न में राइट की तरफ कर्व होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट की तरफ कर्व होता है. नेक्स्ट. What active volcano? Which active volcano is in Italy is famous for destroying the ancient city of Pompeii? Mount Vesuvius. Mount Vesuvius. Mount इतना नहीं, Mount Vesuvius. Now the next question. What is the name of the supercontinent that existed existed millions of years ago before it broke apart into our current continents? यानी अभी जो करंट कॉन्टिनेंट टोटल 7 हैं, इससे इस 7 कॉन्टिनेंट को बनने से पहले मिलियंस ऑफ ईयर पहले जब ये सेपरेट नहीं होते तो सुपर कॉन्टिनेंट को का नाम क्या है? गुड. दैट इज Pangaea. Very good. Now, next. Which African river flows northwards and it's considered the longest river in the world? Yes, good. The Nile River. Nile River about I think 5 to 7 countries से गुजरती है. सबसे
लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी नहीं, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट वन। द लार्जेस्ट वन इज अमेजोन। Recording in progress. So, what do you call the massive circular ocean current system that trap plastic and debris like the one in the Pacific? The ocean, sorry, an ocean guide. ठीक है, यहाँ पर सारे जो भी आप कूड़ा करते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है, ताकि समुद्र गंदा ना हो, या ओशन गंदे ना हो। Which strait can connect the Atlantic Ocean to the Mediterranean? कैसे कैसे नाम होते हैं यार। मेडिटेरेनियन सी। Now with the Strait of Gibraltar. ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही खतरनाक, अगर आ गया ना तो फिर now this type of underground rock layer holds and stores groundwater that we pump up through wells. The answer is an aquifer. Aquifer. The जो एक्वाइफर रॉक होते हैं वो होल्ड करते हैं पानी को ग्राउंड के अंदर ना। What are the three tiny connected bones in the middle ear cord? हमारे ईयर में ये टाइनी छोटे से तीन बोन्स कनेक्टेड हैं, उनको क्या कहा जाता है? Malleus, insus and stips, और hammer, anvil and stip। ठीक है, and steps is the smallest bone in the human body also। जो ये है, ये पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। What chemical process do our cells use to turn food, glucose and oxygen into energy? केमिकल प्रोसेस का नाम बताओ। The answer is cellular respiration। Next. Why does a metal spoon feel colder than a wooden spoon when both are left in the same air conditioned room? Metal is better conductor of heat, so it steals heat from our hand faster than wood. Okay. Metal is a better conductor of heat. Which fundamental force keeps the particles inside the nucleus of an atom bound tightly together? The strong nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स में दो होती है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वन द सेकंड वन द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में एटम्स के बने रहते हैं ना। What is the name of the pigment in our skin that protects us from harmful ultraviolet rays from the sun? Melanin। मेलानिन। ठीक है, नेक्स्ट। Which vital organ in the human body is responsible for filtering out waste from the blood to produce urine? The kidneys।
फिल्टर करने का किडनी का होता है ना. What is the pH value of pure distilled water at room temperature? So the pH value of distilled water at room temperature is 7. Completely neutral. ठीक है. pH value 7 से ऊपर या नीचे होती है तो एसिड बेस कहलाता है. ठीक है. Next. Which gas essential to our atmosphere is produced when organic matter decays in places without oxygen, like swamp or rice paddies? The answer is methane. ठीक है. Methane is now the next question. What is the only metal that remains in a liquid state at normal room temperature? Normal room temperature पे एक ऐसा metal जो liquid state में होता है. That is mercury. Mercury is the metal, but in the liquid form. It is also used in thermometers. What is the boundary surrounding a black hole from which nothing, not even light, can escape? The event horizon. Event horizon. Yes, black hole से एक light भी जल्दी light भी escape नहीं हो सकती है. Now, which planet in our solar system has the highest number of confirmed moons? Saturn. Saturn have the highest number of moons. ठीक है. Next, what do we call the stream of charged particles, electron and protons, flowing outward from the sun through the solar system? Solar wind. That is solar wind. What is the name of the massive space telescope launched in late 2021 that used infrared light to see the very first galaxy? The James Webb Space Telescope, JWST. ठीक है. याद मैंने कहा था आज आसान क्वेश्चन नहीं है. लास्ट टाइम आसान थे, इस बार टफ लाएंगे. Now, what causes the beautiful green and purple lights in the night sky near the Earth post, commonly known as auroras? Solar particles colliding with gases in the Earth upper atmosphere. Okay. Now, the next question. Which dwarf planet is located in the asteroid belt between Mars and Jupiter is the closest dwarf planet to Earth? Ceres. Ceres is the dwarf planet. Okay. Now, next. What basic computer unit consists of a sequence of exactly eight bytes of data? A byte. Next.
What type of advanced code uses only two numbers, 0 and 1, to represent all computer data? ये पता होना चाहिए. That is binary code. ठीक है, बाइनरी कोड में सिर्फ 0 and 1 यही दो नंबर यूज होते हैं बस, और कोई नंबर यूज नहीं होता. Now, what is the name of the largest cannon in the solar system located on Mars? That is Valles Marineris. Next, what kind of star is incredibly dense, spinning rapidly, and shooting out regular pulses of radiation like a cosmic lighthouse? A pulsar. Dense होता है, बहुत ही तेजी से घूमता है, और रेगुलर पल्स पे रेडिएशन को छोड़ता है, जैसे लाइक कॉस्मिक लाइट हाउस होते हैं. Now, who is considered the father of the Indian Constitution for leading the committee that drafted it? Dr. B.R. Ambedkar. What major historical event in 1919 led Mahatma Gandhi to launch the non-cooperation movement across India? The Jallianwala Bagh. ठीक है. Which ancient civilization developed the zero and the decimal system that we still use in mathematics today? Ancient India. ठीक है. जीरो एंड डेसिमल सिस्टम एंसेंट इंडिया ने डेवलप किया था. Now, who was the first Mughal emperor of the India who founded the empire in 1526? Babar. Babar is the first Mughal emperor of India. Which famous 13th century Italian explorer traveled along the Silk Road all the way to China and wrote a book about his journey? Marco Polo. Next. What ancient grand library in Egypt was famous for holding hundreds of thousands of scrolls before it was destroyed? The Library of Alexandria. So, who was the first person to sail completely around the world? The answer is Ferdinand Magellan. So, his crew finished the journey after the passed away during the voyage. Now, which ancient legal code from Mesopotamia is famous for its strict philosophy of an eye for an eye? Wow.
द कोड ऑफ हम्बुराबी हम्मुराबी हम्मुराबी ने का कोड था जिसमें सिंपली एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वुड यू फाइंड द एंशिएंट रॉक कट अजंता एंड एलोरा केव्स? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता एंड एलोरा की गुफाएं केव्स पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, what was the name of the first successful permanent British settlement established in North America in 1607? Jamestown. That is Jamestown. How many members are nominated by the President of India to serve in the Rajya Sabha, the upper house of the parliament? 12 members. ठीक है। Next, what is the term length for a judge serving on the International Court of Justice? 9 years. Who wrote the famous Indian classical epic, the Ramayana? रामायण किसने लिखी थी? से महर्षि वाल्मीकि जी ने। ठीक है। और महाभारत किसने लिखी थी? लिखी तो गणेश जी थे, लेकिन वर्ड जो थे आई थिंक वेद व्यास जी ने बोलता। सो which prestigious international prize is awarded annually in categories like physics, chemistry, medicine, literature, and peace? The Nobel Prize. ठीक है। What do we call a governing system where the country is headed by an elected president rather than a monarch? A republic. ठीक है। Next, which fundamental right in the Indian Constitution allows citizens to move the court if they feel their other rights are being violated? The right to constitutional remedies. Next, which epic fantasy novel features character like Frodo Baggins, Samwise Gamgee, and the wizard Gandalf? The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien. ठीक है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। शकल देख के सबको लग रहा है कि आ नहीं रहा है। What is the maximum number of players allowed on the field for one team during a standard game of cricket? That is 11. ठीक है। फुटबॉल में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, बास्केटबॉल में 6 सॉरी वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में भी शायद 6 होते, 6 या 7 होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं। और कोई गेम बचा? गिल्ली डंडे में एक ही होता है, दो एक दो ही होते हैं। ठीक है। Which UN organization headquartered in Paris focuses on preserving World Heritage Sites, education, and science? UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. शॉर्ट फॉर्म यूनेस्को। अब इसमें यूनेस्को लिख के इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, what name is given to the highest law making body in India which consists of the Lok Sabha, Rajya Sabha, and the president? The Parliament of India. ठीक है। The Parliament of India is the highest law making body in India. No. So why should we never throw plastic bottles or bags into the river or ocean?
सिंपल उसका क्या, बिकॉज द प्लास्टिक कैन नॉट बी डिके and by mistake the animal can eat it and being sick and get very sick. Next, है ही नहीं, 50 क्वेश्चन खत्म हो.